G-O-D. The power to generate, power to operate, and power to destroy. It's entirely up to us that which power we would love to use for which purpose. And I am very happy today that today we have that wonderful example right in front of us. A man who used all those powers to best of his ability and to his capacity. He has been an entrepreneur, he's been a wonderful creative person himself, a man who has promoted films, produced films, acted films, and the best part is that he has also used his energy for so many humanitarian activities. And he is no other than the chief guest of the day. Let's give a big hand to Suniel Shetty. Success is something that is not guaranteed, for sure. So I worked, I invested right, and make sure I invested in businesses that didn't need me, and could do with the others managing it, or people managing it, or investment in properties, or rent, or anything like that. Because I had that in me. And I tasted money early in life, when I was 15, because I worked for it, not that it was given to me on a platter. एक बात मुझे definitely कहनी है, एक बहुत ही senior actor है, और actors की अलग-अलग तरीके हैं. Everybody has a different way of performing. तो this particular actor, मैं नया था, successful था, action hero था, generally लोग को लगता था कि यार he is the toughest. लेकिन ये एक्टर जब भी परफॉर्म करता था, he used to come in front of me and हाँ ऐसे खड़े रहो, इधर करो, ये करो, ऐसे बोलो, ये बोलो, and मैं सीनियरिटी के चक्कर में हाँ सर करता रहा. I was performing the way he wanted to perform because he wanted to dominate. And then one day, Danny Saab has been very, very close to me, and somebody who's always inspired me a hell of a lot. Kiki, from my first film, I worked with him. He was observing. So he said, "Come here, Suniel. What's happening? Why are you giving take after take? You didn't do it in your first film." So I said, "Sir, I don't know why." He says, "Because you're allowing him to dominate. Bikta kaun hai?" I said, "Sir, मैं समझा नहीं." He says, "Bikta kaun hai? किसके बलबूते पे ये फिल्म है?" So I said, "हम सब है ना, इसमें नहीं, हीरो पे होता है, तो डोंट बी मॉडेस्ट, आप बोलो हाँ." तो वो कौन होता है तुम्हें बोलने, डायरेक्टर को बोलने को? And I swear, it was fear. I went back home, I thought, yeah, that's true. This is not my personality, but I'm going to change. The next day, when the actor came and the same scene was continuous, इधर खड़े रहो. So I said, "Sir, आप अपनी जगह पे खड़े रहो, with due respect. एक्शन का टाइम भी आएगा, तो कहीं हाथ फिसल नहीं जाओगे." And he understood. It was not my personality. लेकिन उनसे बेहतर एक्टर तो मैं था नहीं, उनसे बूमिंग आवाज़ तो मेरी थी नहीं. मेरी strength क्या है? I worked on my strength. So you will face fear. If you go to Mumbai, you've got a car, you've got a train from him. A train, you've got a plane. Where do you want to go? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी का राज क्या है? इस उम्र में पर्सनैलिटी का राज क्या है? कंसिस्टेंसी है. किसी भी चीज़ में अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, आप अचीव कर ही पाओगे. जब मैं इंडस्ट्री में आया था, when I first got an opportunity, I knew one thing for a fact, कि हर जो हीरो वहाँ छाया हुआ है बॉक्स ऑफिस पे, लोगों को का दिल जीतने के लिए, उसमें कुछ ना कुछ खासियत है. मेरे में क्या खासियत है? And I realized I had a good body from a very young age. मुझे बनना था क्रिकेटर, देश के लिए खेलना था, लेकिन टैलेंट इतना है कि मुझे मौका नहीं मिला. But I didn't regret. Sir Vivian Richards ने मुझसे कहा था, when I was 13 or 14, I had met him, और उनके हाथ इतने बड़े थे, बाइसेप्स इतने बड़े थे. तो मैं बोला, "सर, आप
ऐसी बॉडी कैसे बनाई आपने? तो कहा to hit harder son, to hit harder. And that's the day I said, you know, I need to start training. I was 14-15 और मैं free hand मैंने शुरू की, तो body बन चुकी थी. तो then I realized I'm a great fighter. तो चलो focus इसी पे रखता हूँ. मेरी पहली फिल्म आरजू थी. आज लोग बलवान कहते हैं क्योंकि फर्स्ट रिलीज थी. मैं 1 हफ्ते के लिए एक्टिंग क्लास गया था जब मुझे मौका मिला. मेरी फिल्म आरजू शुरू हुई ऊटी में, स्टार्ट टू फिनिश ख़त्म हुई. वापस आया, आई वॉज एक्साइटेड, सबको पता था मैं फिल्में कर रहा हूँ. एंड रिलीज़ कब होने वाली है, रिलीज डेट, और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बीच में झगड़ा हुआ. एंड द फिल्म गॉट शेल्फ्ड. आई वॉज ना कोई कनेक्शन, ना ही कुछ लेना देना इंडस्ट्री से, करूँगा तो क्या करूँगा. बट देन आई गॉट, बिकॉज एक पिक्चर की वजह से और कुछ एक्शन की वजह से एडिटर्स लोग बोलने लगे, यार सॉलिड एक्शन कर रहा है, कितना अच्छा है ये वो. एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जाकर बलवान और काफ़ी फिल्में मिली. सो वो मेरे लिए आपका इंस्टीट्यूट था. दैट 60 days of shooting is where I learned everything about films, whatever I could. So everything has an opportunity, and because of that ये image रहा मेरे में. And when you have an image, you got to live up to that image. So when you have to live up to that image, मेरी image थी of an action hero. तो body पे ध्यान देते रहना पड़ा. And fortunately today it's become a part of my personality. मेरे DNA में वो है. So, you know, I eat right, I train hard, and I'm consistent. I'm glad that Marwa Saab didn't become an actor. नहीं तो काफ़ी लोगों की छुट्टी हो जाती है, काम नहीं मिलता उनको. आज भी आपकी पर्सनालिटी ऐसी है. So sometimes you wish कि अच्छा हुआ यार एक्टर नहीं हुआ, 2 फिल्में कम मिलते. But I think वहाँ ना होते हुए you're doing such a good, brilliant job with your students. Smart students, good questions, a lot of energy. So congratulations on that.